ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रे काहे कि न डेवलप करि परिबा एटा होची हम समस्त आगे गोटे बहुत बड़ा चैलेंज भी आम समस्ते ताको समाधान करिवारे माने मु तो जानि छी जे आपण इंस्टीट्यूट रे ही माने सूर्य हो बाकी समस्त होंतु माने दे आर वर्किंग ऑन एन एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन ए दिगरे काम भी करूची सो माने इफ द फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स आर वर्किंग ऑन इट आई माने एक्सपेक्ट the final year students and those who have qualified already AAE and of course the professors who are motivating all of you like they will be having many ideas and many beautiful ideas that will solve the problem in your future. I strongly believe it. Again, I congratulate all of you. I wish you best of luck, best wishes for your near future and upcoming future. आपण माने आगामी दिन रे ओडिसा रो एग्रीकल्चर फील्ड को रुद्धिमंत करंतु ए प्रकार आशा जगन्नाथ पाखरे प्रार्थना रखिकी मु समस्त को आउथरे धन्यवाद देवा को चाहूची सार मान को धन्यवाद देवा को चाहूची ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देवा को चाहूची आपण मान को समस्त को मोर शुभेच्छा जनाउची वंदे मातरम. Thank you, Shri Abhilash Pandaji, for sharing your amazing way to impart knowledge and way to define service. Now it's time for us to listen from the achievers. So here we go with our first assistant agriculture engineer, Shri Biswajit Arjosi Bhai. Good evening, everyone. Respected Dean Sir, respected teachers, respected Abhilash Bhai and Agrivision Odisha Unit ro sabu members, my dear friends and lovely juniors. First तो मु एग्रीविजन ओडिशा यूनिट को थैंक यू कहया को चाहिए ए अरेंजमेंट पाई हमें केबे भी आशा कर नतलु कि ई स्टेशन रे एमती ओटे हे परियो बोल के बहुत खुशी लागुची. बहुत बहुत धन्यवाद एग्रीविजन ओडिशा यूनिट. सक्सेस रो श्रेय मु दि जण को दवा को चाहिए. फर्स्ट टीचर मान को दवा को चाहिए कि टीचर मान का सपोर्ट नथिले बहुत एटा केबे भी सफल हेबा नथंता. गोल्डन जुबली बैच सतरे लक्षे बैच कि 25 वर्ष पर जोटा गोटे स्टॉप हो जाता डबल ए पोस्ट बाहर से आम बेल को बाहर आम मैंने सब पाइलु से बहुत बड़ा कथा. सेकेंड श्रेय देवी मु रूममेट मान को बीपी देवाशी साहू अविनाश प्रधान भाई अर्जुन समस्ते मिसिकी पढ़ापढ़ी करूँ रूम रे जहाँद्वारा समस्ते भी अविनाश भाई बीपी देवाशी साहू समस्ते आम पाइलु. बहुत खुशी कथा एटा. जूनियर मान को गोटे कथा कहया चाहिए कि संजय दास सर जोटा कहले से कथा मु रिपीट करी कि आउ नेक्स्ट पोस्ट बाहरला बेल को आहरी 2-3टा कॉलेज रू पिला माने पास आउट हो सारी थे बहुत से 2-3 गुणा पिला एक्सट्रा थे. एथर तो 560 पिला अप्लाई करते 130टा पोस्ट पे से समय पोस्ट भी कमी थाई पारे बहुत पिला भी अप्लाई करते पारते. तेणु आम पिला माने कॉलेज रे जो स्कोप मिलुची बहुत भल स्कोप अच्छे कॉलेज रे पाठ भल से पढ़ापढ़ी करंतु. जो भी सीनियर सहित कंफर्टेबल किसी भी प्रोब्लेम हेले सीनियर मान को पचारे भी सीनियर माने सब समय रे हेल्प करिया को प्रस्तुत होइक अछंती. बड़ भाई भौणी भी पचारि पारे किसी भी प्रोब्लेम हेले. विशेष किसी कहबेनी बहुत पिला अच्छा सांग मैंने सब कथा कहे आती कहे. थैंक यू एग्रीविजन ओडिशा यूनिट. थैंक यू. Thank you bhai for sharing your amazing work. So next we have Sushri Paripurna Devi Didi. I think Paripurna Didi is not available here currently. Didi, अच्छे अपन? I think so Paripurna Didi is not available. Let's welcome our next senior,
Om Shubham Sai bhai. Maybe we are facing technical glitches. Let's move to our next senior, Shri BP Devashish Sahu bhai. Bhai, please. Good evening, everyone. Respected Dean Sir, respected other professors, and lovely juniors. I thank you all for organizing such a ceremony at this dire time, and thank you to the Agrivision Odisha unit also. ସମସ୍ତେ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ସିନିୟର ମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ ସମସ୍ତେ ତ ତମକୁ କହିବେ strategy, but strategy course curriculum ଅନୁସାରେ ଚେଞ୍ଜ ହବ, ଟାଇମ ଅନୁସାରେ ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଯୋଉମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ strategy ଅଲଗା ରହିବ, ଯୋଉମାନେ ଏବେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ strategy ଅଲଗା ରହିବ। ତ strategy ତ ଚେଞ୍ଜ ହବ, ବଟ୍ ତମର ପ୍ରିପାରେସନ ମାଇଣ୍ଡ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ବଟ୍ ଏଇଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ତମେ ଡୋଣ୍ଟ ଜଷ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର ଫର ଦି ସେକ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିପାରେସନ। ଯଦି ତମର ସେଇ ଲାଇନରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଜବରଦସ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପ୍ରିପେୟାର କରନି। ତମର ଯୋଉ ଲାଇନରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ଲାଇନରେ ପ୍ରିପେୟାର କର। ପ୍ରେସର ଅଲଗା କେହି ପକଉଛନ୍ତି, ତମ ରିଲେଟିଭ୍ସ ପକଉଛନ୍ତି, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ପକଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ତାକୁ କମ୍ପେୟାର କର, ବଟ୍ ନିଜର ଡିସିସନଟାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅ। ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନିଜର ଯୋଉଟା ଲାଇକନେସ୍ ଅଛି ସେଇ ଥ୍ରୁରେ ଗଲେ ବେଟର ରହିବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତମର ସିନିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବି ସିନିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ମାନେ ସବୁବେଳେ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଗାଇଡ୍ କରିବେ। ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ହବାର ନାହିଁ। ଆଉ ସେତିକି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦରକାର ପଡିବ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ, ସବୁବେଳେ ଫ୍ରି ଅଛୁ ଆମେ। ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you, bhai. We loved your words, and especially the line itself that don't prepare for a aim just for the sake of preparation, but do it desperately if you want to achieve it. Now, I would like to move to our next senior, Sushri Arzu Parveen Didi. Maybe we don't have her right now. Let's move to our next senior, Sushri Nibedita Dena Didi, please. Hello, is my voice audible? Yes, Didi, it's audible. Hello, everyone. Thank you for this program. And I don't know, I don't have any kind of strategy for this study and anything. I think I'm lucky enough that जेमती पास हो का ये पोस्ट बाहरी गला JRF रा काउंसलिंग पकेया पूर्वरु ही मतलब नोटिफिकेशन आसी गला and everything I think is connected to like सब किछि फेथ मतलब तम भाग्य ऊपर ही डिपेंड ये बट आमे हम भाग्य निजे भी लिखि परिबा किछि भी जिंस हो नॉट कि मु कहूनी कि जरूरी नहीं कि डबल ए पाई कि एनी एग्जाम हो जोटा कि तमे क्रैक करिया को चाहू छ अपार्ट फ्रॉम तम हार्ड वर्क एंड तमर डेडिकेशन टुवर्ड्स द मतलब स्टडी टू क्रैक दिस एग्जाम किछि जिंस अछि जोटा कि आहुरी अधिक भी ता संगे मैटर करे जोटा कि किछि लोक जो माने नास्तिक से माने कहंती हमर लक एंड जो माने आस्तिक से माने कहंती भगवान को ब्लेसिंग्स मो पाई जदी गोटे एग्जाम को क्रैक करिबार अछि तुमको 50% तमर हार्ड वर्क एंड 50% गॉड रो ग्रेस सेटा नथिले केबे भी मो पाई मु बहुत बिलीव करे प्रेयर्स एंड ऑल ऊपर मते लागे जे जो माने बिलीव करूथबो से मानक पाई भी गॉड ग्रेस हबा बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट एंड सब बेले निज ऊपर कॉन्फिडेंट रख कि मु ए जिंस करूची मते ए जिंस करिवार अछि ओवर कॉन्फिडेंट नुह ओनली कॉन्फिडेंट रो मते ए जिंस करिवार अछि मु करि पारिबी
and stay away from negative people. बहुत लोक एमती थिबे तुमको डिमोटिवेट करिया पई, बहुत इवन तुम फ्रेंड्स रे भी किछि थिबे लाइक वी से फेक फ्रेंड्स, एंड तुम रिलेटिव्स भी किछि थिबे जो माने तुमको डिमोटिवेट करिया को सब बेले चाहिबे. बट स्टे अवे फ्रॉम देम, स्टे मोटिवेटेड ऑलवेज and believe in yourself and believe in God. Everything is possible. And एमती नहीं कि तुम्हें फर्स्ट अटेम्प्ट रे ही सब किछि क्लियर करि परिबो. फेल्योर अछि बट हमें फेल्योर रु ही सिखिबा. मु तो जानि भी नथिली कि 4 वर्ष परे मते कोन करबार अछि, लाइक मते कोन को एग्जाम दबार अछि, कोन पई प्रिपेयर करबा अछि मु जान नथिली. बट मते लागे जेटा गॉड ग्रेस कि मते पास हो का मतलब डबल ई रो पोस्ट बाहरला एंड नोटिफिकेशन आसिला एंड थ्रू एंड थ्रू वे म पाई भी गली. सब बेले निज ऊपर फेथ रख, भगवान को ऊपर फेथ रख, सब किछि ठीक हे जिवो. एंड एनीथिंग लाइफ रे किछि भी करिया को चाहू सब किछि तमे अचीव करि परिबो. बस कॉन्फिडेंट रहो निज ऊपर एंड स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल. एटा सबुठ अधिक इंपोर्टेंट बिकॉज आजिकली वर्ल्ड रे डिमोटिवेट करिया पे बहुत लोक मिलबे एंड मोटिवेट करिया पे बहुत कम लोक मिलबे. सो एतिकी ही कहबी. बाकी सब जूनियर्स माने तो जेते बेले भी जहाँ भी प्रॉब्लम अच्छी कि किसी भी हेल्प दरकार अच्छी, ऑलवेज यू आर ऑलवेज वेलकम. एंड थैंक यू. Thank you, Arjuti, for your amazing work to remain confident and to stay motivated all the time and to believe in ourselves and believe in God. So next- can I intervene, organizers? Yes, sir, of course. लव यू अर्जु, बहुत बढ़िया जिनस गुड़ा सब कहलु. रियली सी स्पोक फ्रॉम हार्ट. जो पर्टिकुलर से जिनसटा कहला इन ए कैंपस लाइक आवर्स, many students are there who normally try to demotivate others because they do not want to do anything, so they don't want that others should do anything. So I have seen that there are many demotivating forces, and Arju, whatever she spoke from her heart, really appreciate you. Thank you so much, Arju. Thank you, Thank sir. you. So next speaker we have Sushri Nivedita Jena Didi. Respected Dean Sir and all other professors, my dear juniors and my newly joined AA friends. Thank you to AgriVision Odisha and my college juniors for organizing such a event. AA exam qualify कला परे जितने की खुशी लगी नथला ताठू बेसी काम जानला परे टिके टेंशन लगिला. सती पई जे कोनसी जॉब पई प्रिपेयर करिवो आगुरु से विषय रे जानिबा दरकार. जॉइन कला परे काम कोन से सब विषय गोटे क्लियर आइडिया हवा दरकार. जॉब पाई टेंशन तो समस्त को रहे, किंतु से टेंशन टा थर्ड ईयर एंड रो कि फोर्थ ईयर रो स्टार्ट हेले भलो. फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ए सब ईयर रे नॉलेज गेन ऊपर बेसी फोकस करिया दरकार. सब जिंस ऊपर गोटे क्लियर कट आइडिया रहबा दरकार. भुवनेश्वर रे रही कि जदी सब फैसिलिटी पाई कि एग्रीकल्चर माने ओडिसा रो गोटे बोली गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रे ते भलो भलो पिला जॉइन करंती. तो एग्रीकल्चर ऊपर गोटे क्लियर आइडिया रहे दरकार जे आम कंट्री रो एग्रीकल्चर बे को स्टेट रे अछि, ओडिसा रे एग्रीकल्चर को स्टेट रे अछि. तो मु कहबी जे नॉलेज गेन ऊपर बे फोकस कर बेसी इंपोर्टेंस दवा दरकार. एफर्ट देले पढ़िले तो जॉब हे जिवो. सती पई जेमती बीपी देवासिस कहले जे जो लाइन रे तुमको इंटरेस्ट अछि, तुमको को जॉब रे खुशी मिलुची आ को जॉब रे तुमको खुशी लागिबो, से जॉब तमे निजे निजे पई डिसाइड कर परिबो.
मु किसी जन को सपोर्ट बिना तो केबे भी डबल एग्जाम क्रैक हे पान नथांता नारायण सर अंबिका सर मो बैचमेट जयश्री सुकन्या ओम समस्त बहुत सपोर्ट थिला सेति पई बोधे एग्जाम क्लियर हो गला आउ सबटू बेसी तो भगवान को आशीर्वाद आउ मो माँ को एफर्ट मु एतकी कहबी थैंक यू Thank you, Didi, for sharing the work ethics and strategy. It's a pleasure to welcome you. So now we have Shri Saurabh Jain Bhai. Jigyansa, tikke interfere karibe. All the teachers, everyone is kindly and heartily invited to interact with all our seniors. We are just here to coordinate you and we want you all to be free. And thank you. Bhai, please continue. Am I audible? Again. Respected Dean Sir, my dear professors, friends and juniors, good evening to everyone. Saurabh Jain. First of all, I would like to thank all my teachers, friends, everyone who helped me to be in this place. First of all, again, teachers mane बहुत हेल्प करचंते एठी पहुंचिया पे स्पेशली डीन सर को एडवाइस सब बेले बहुत मोटिवेट करे आ तापरे नेक्स्ट इज मु जोड थिली या पूर्वरु महिंद्रा एंड महिंद्रा थिली और एमती कोविड टाइम रे सब लॉकडाउन हे जायतिला सब एकोटिया थिली सेपडे तो मु बहुत लकी जे मो टीचर्स माने एमती समान कंडर रे मु थिली एमती फ्रेंड पाइची जादर मु एग्जाम तो क्वालिफाई करि परची आ ओडिशा को फेरी पारची सेति पई समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद आउ फ्रेंड्स मान को कहबा को चाहूची जे जो मन डबल ए पाइचंती आज पर्यंत जेमती हमें सब मिसिकी अच्छे भाईचारा काइंड ऑफ टाइप ऑफ मिसिकी सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करचे जन जन को सहित ठिया आइचे तो रिक्वेस्ट करी समस्त एमती काइंडली कोऑपरेट करिया समस्त को आ सब दिन जेमती हम बॉन्ड टा जेमती स्ट्रांग होचे सेमती रहिबो आउ जूनियर्स मान को जेमती टोनी अच्छी अम्लान विवेक गौतम रो बर्थडे आज हैप्पी बर्थडे गौतम तो जेमती हॉस्टल रे हम समस्त जेमती मिसी के रहउजे तो गोटे काइंड ऑफ स्टडी एनवायरनमेंट हॉस्टल रे मेंटेन करया चेष्टा करिया आउ सर जेमती कहले प्रति वर्ष बहुत बहुत कॉलेज स्टूडेंट ऐड हेबे एग्जाम कंपटीशन पई तो समस्त को स्पेशल स्किल्स सब दिन लर्न करिया दरकार निज को अपग्रेड करिया दरकार जा द्वारा हमें लाइफ रे जे कोनसे आगो को हडल आसबा हम इजीली ओवरटेक करिवा सो एबे लॉकडाउन रे बहुत भलो टाइम अछि समस्त निज को अपग्रेड करिवा को मु रिक्वेस्ट करिवि सब दिन किछि नवा सिखा and that's all. Thank you everyone. Thank you Agrivision Odisha. Thank you everyone. Thank you. Thank you, Bhai, for your words to upgrade ourselves and to stay in a complete. Thank you, Bhai, for your kind words. So now we have Susri Khyaneprabha Giri Didi with us. Hello everyone. Again, the voice audible अच्छी continue करो. Hello everyone, respected sir and my lovely juniors and my lovely friends. आज जो आयोजन करचंती समस्ते सेमानंको मोर प्रथमे धन्यवाद तापरे सर मानंको मोर अशेष धन्यवाद तांकर आशीर्वाद रो मु आज गोटे एते भलो पोस्ट रे असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर भाबरे एबे काम करिया को सुजोग पाइबी जो पोस्ट रे कि स्पेशली रूरल पीपल रो डेवलपमेंट इन्वॉल्व होची
मोर प्रथम इच्छा थिला कि रूरल पीपल मानकर मु किछि तांको हेल्प करि परबी, तांकर किछि डेवलपमेंट करि परबी, तांको फाइनेंशियली स्ट्रांग करि परबी। आउ सेति पई मु जेहेतु एई पोस्ट अछि, ए पोस्ट तो स्पेशली रूरल पीपल मानक पई ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ମୋ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ମତେ ବହୁତ ଏନକରେଜ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ AA ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଡିପ୍ରେସ ହେଇଯାଇଥିଲି, କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ, ଏତେ ପିଲା ଦଉଛନ୍ତି, ଏତେ ସିନିୟର ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଜେନେରାଲ ର ବହୁତ କମ ସିଟ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଡିପ୍ରେସ ହେଇଯାଇଥିଲି। ବଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ମାଇ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ହୁ ଏନକରେଜ मी, ଆଉ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ବି ମୋର ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେମାନେ ବି ମତେ ଏନକରେଜ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜୁନିୟର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ତମେ ମାନେ ଯାହା ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ ତମ ଜୀବନରେ, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ତମେ ପଢି ଚାଲିବ। କିଛି ଭାବିବନି କି ତମେ ମାନେ ଫାଇନାଲି you will achieve or not, but do labor। एंड गोटे कथा मन रखिबो जे हार्ड वर्क डज नॉट गोज इन वेन, जोटा कि मु मो लाइफ रे रियलिटी कथा कहूची। मु बहुत लेबर माने जेतरे मेडिकल पे प्रिपरेशन करथिली मु बहुत लेबर करथिली, बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल्ड। बट लकीली भगवान सेई लेबरटा बधे एबे मते एई AA क्रैक करिया रे देई देले। तो सेतबे मु कहूची कि तमे माने किछि फाइनल कौन हब रिजल्ट, से रिजल्ट को न भाबिकी लेबर करि चलिबो, श्योर सक्सेस मिलिबो, केबे ना केबे श्योर सक्सेस मिलिबो। आउ लोक मानकर माने जो माने तुमको डिमोटिवेट करूचंती, सेमानको कथा केबे सुनिबनी, कोन कहउचंती कोन नाही, सेमानको कथा केबे गुरुत्व दबनी। केवल पढिबो, निजर माने निजर मन कोन कहउची से हिसाब रे तुमे तुमरा काम करिवो। आउ भगवानଙ୍କ ଉପରେ विश्वास रखिबो, सेटा होची सबुठु बड़ कथा। आउ समस्तଙ୍କର ब्लेसिंग भी निहाती दरकार। सबु गुरुजन माननकु रेस्पेक्ट दबो, सर मानकु रेस्पेक्ट दबो। आमे केतरे क्लास रे पछरे बसी के एम्ति किछि कहि दो, बट सेटा करिवनी केबे भी। सर मानकर ब्लेसिंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट। तो सेति में सर माननकु सबु बेले रेस्पेक्ट दबो, सार माननकु सबु बेले क्लास रे सहयोग करिवो, तांको पढ़ा को नै कि आमे केतरे करू ना, सेति में मु कहूची मु सेति में सहयोग करिवो सब बेले। आउ पढ़िबो, मन देकी पढ़िबो, एंड यू विल गेट सक्सेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, आपण स्माइल डेट देखा जाउची पूरा, एते खुशी अछंदी आपण। थैंक यू सो मच। एंड हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन, सबु बेले मन रखिबो, that's a promise। And thank you so much Didi। Now I would like to invite some of our professors, to the very beloved one I would like to invite Ambika sir to speak something for every student present over here। Ambika sir, please। Good evening to all, and congratulations to all the AA crackers। बहुत खुशी लगुची पिला माने अरेंज करछन्ती प्रोग्राम टा, आ तांकर वर्षन मध्ये वॉइस मध्ये दउचन्ती, सजेशन दउचन्ती, एडवाइस मध्ये दउचन्ती। डीन सर जहाँ कहले दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तमे वर्तमान स्टूडेंट लाइफ रो सर्विस लाइफ को गला, सर्विस लाइफ इज द डिफरेंट, यू हैव लॉट्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी विथ यू। तमे बी ऑनेस्ट, सिंसियर, डू हार्ड वर्क as much as possible तमे करो, and you will get the return, recognition मिलिबो। Ultimately college will be recognized as number 1 because you are all the products of this college। but आ गोटे सजेशन जे तमरो जहाँ हैबिट अछि, हॉबी नहीं, हॉबी जोटा अछि प्रोफेशनल लाइफ रे, सर्विस लाइफ रे जहाँ भी हो ताको किंतु तमे बजाय रखियो। That is most important, which will help you in future। कार राइटिंग रे अछि, कार म्यूजिक रे अछि, जहाँ भी करिकुलर एक्टिविटीज अछि, that you also maintain।
side by side. ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କହୁନି, ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବେ. But congratulations to all of you, to the arrangers also, and all the students present over here, and my respect to all the teachers. Thank you. Wish you all the best. Thank you so much, sir, for your love and affection. Now I would like to invite Dr. Ajay Kumar Das, sir, to speak something. Okay, I'm audible to you? Yes, sir. Okay, good evening all. Actually तमाने तो कहूँ आउ गोटे जिन आड कर कारण तो मन रखनु तुम छोट जो पोस्टिंग होता पैनल किए कौटी पोस्टिंग आउटे कहते लाइवली लगे भल लगे जगह एटलिस्ट यू विल पोस्टेड फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years एटलिस्ट. अच्छा आ गोटे भल जिन मत कह ओकेजन मन पड़ू तो यू आर नाउ ऑल आवर फ्रेंड्स नॉट स्टूडेंट्स. Of course, the organizers are students, but still they will be budding agriculture. Tomorrow they will be graduated and they will be again joining our friends club. Okay. So, what is this? Man, पड़ू ची कौन? तमें देखी थी वो बर्तन सिचुएशन ने बर्तन ये पैंडेमिक सिचुएशन कहूँ या पूर्वरु भी कहूँ ची. Most of the stalwarts in IT sector and they are established in their sectors, whatever profession they are adopting, they actually back to agriculture. किंतु तमें मे भी जोटा कथा अर्जु परवीन अर्जु कहूला एवं आउ के भी कहूला you have chosen a profession, you know, that is you need not to again back to agriculture, but you are already in the agriculture. Maybe मु तमर फर्स्ट ईयर पढ़ेला ले जेतले नौकरी कोर्स चला थर्ड ईयर कोर्स से कोर्स सब बोले से कथा ना कहे. When you choose the profession, is it your choice or your parents' choice or your score, whatever it, but try to be love in this profession. Definitely it will pay you. Definitely it will be a unique profession. But you are just entering into the profession as a professional. So need not to, I mean, what a chhadi ki profession do ana bartan so feruchanti agriculture sector, because that is the reality. That is the, I mean, कौन कहे मैंने सेटा इन केवल गोटे परमानेंट बेसिस रे सेटा इन दैट विल बी पे यू इन फ्यूचर. तेणु तमें यू हैव चूजन ए प्रोफेशन, मे बी यू हैव चूजन मे बी बाय योर पेरेंट्स और व्हाटएवर इट, बट यू हैव ऑलरेडी इन ए प्रोफेशन. Need not back, you are need not in future you have to change your profession, rather you will be in the profession and continue like this. So thank you all for organizing this kind of seminar and online seminar. Okay, please continue and give your place of posting so that we will be remembering that yes, he is there. Okay then, thank you so much. Okay, bye. Thank you so much, sir. Thank you for your kind words. Now I would like to invite Dr. Jagdish Chandrapal sir to speak something. Hello, am I audible? Yes, sir. Good evening to all. Congratulations to the achievers 2019 batch from CIT. Thanks to the organizers, AgriVision, and some of our students for organizing such a webinar, for felicitating 2019 students. Thanks to our two friends, Jigyasa Bal and Aishwarya Mansingh, nicely coordinating the program. I wish all the agricultural engineers a success in their professional life. Thank you all. All the teachers have told some many things. I do not want to tell more. Thank you all. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Now I would like to invite Sushri Paripurna Devi Didi to kindly speak. Is it audible? Yes, Didi. Hello. Again, Didi, audible. A very good evening.
A very good evening to one and all. And मत सांग मैंने सब कहले बस एतिकी कहबी बीपी आउ आरजू जहाँ जहाँ कहले मुझे टिके टिके एक्सट्रैक्ट करने को चाहूँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल माने तमे तम माने कौन कौन तमे तमरा एम रो केबे भी डाइवर्ट हबनी. माने जदी इफ समवन वांट्स टू माने परस्यू हिज करियर इन एमबीए और समथिंग एल्स देन जहाँ को जोड़ी इंटरेस्ट सेटा समस्त से आड़े करो. एमती ना कि डबल ए पोस्ट बाहरी तो मु एआडे पसिबी एमती केबे फ्लक्चुएट करनी. जहाँ जो लाइन रे एम अच्छी से लाइन रे तमे करो. एंड सेकेंडली माने को आमे मो श्योर अच्छे कि आमे समस्ते मोस्टली समस्ते ड्रॉप करे मेडिकल पाई कि जहाँ भी पाई हो तो केबे भी डिमोटिवेटेड हबनी कि मो लाइफ रे सबले फेलियर आछि कहि कि माने केबे एटा भाबिबनी कि मोर मेडिकल हेलानी एबे एटा भी हबनी मोर किछि हबनी कॉलेज भलो सेमिस्टर रे भलो ओजीपी आसुनी कि भलो किछि आसुनी त मोर किछि करि परिबिनी. केबे ए जिंस पॉजिटिव रुह कि हाँ आई कैन डू समथिंग एंड सब बड़े गॉड फियरिंग रुह. माने जहाँ भी करूच ठाकुर को माने भाभी की कर कि माने जमती कि केबे भी किछि नेगेटिव जिंस करनी लाइफ रे सब बड़े सेटा रख बिकॉज माने किछि पॉजिटिव स्पिरिट वर्ल्ड एग्जिस्ट करूची. तो तमे जेमती काम करिबो तुमको से हिसाब से तुम कर्मर फल मिलिबो. एटा मो पर्सनली बहुत बिलीव करे. देन सेकेंडली आमे समस्त को आंसर पढ़ी चंदी माने देरी हो कि जो भी हो सर सब बेले देखिबो 5 मिनिट्स लेट करले कि जहाँ भी होले अटेंडेंस दियंतिनी. आमे समस्त भाबिते बाय जिंसटा को कि काहे कि हमको अटेंडेंस मिलुनी या जहाँ भी हो. बट जॉब लाइफ रे आसला परे मो जिंसटा बहुत माने सर को जहाँ भी सर करूथिले तांकर बहुत इम्पैक्ट कौन बिकॉज आम माने जॉब लाइफ आसला परे सिंसियरिटी पंक्चुअलिटी एटा बहुत मैटर. आमे कॉलेज कौन हाँ 15-20 जाउथिले से सब कॉलेज लाइफ रे चलुथिला स्कूल लाइफ रे चलुथिला. बट ऑफिस रे तुमको गोटे डेकोरम मेंटेन करिया पड़िबो टाइमली जीवा को पड़िबो. तो ये सब तमे एबेठू माने सिखि गले भलो कि केमती सबले पंक्चुअलिटी रहइबो गोटे सिंसियर रहइबो. तो सर मान को टीचर्स मान को सपोर्ट करो जहाँ भी असाइनमेंट के जहाँ भी कर टाइमली कंप्लीट करो. दोज आर वेरी इंपोर्टेंट थिंग. भी कि बहुत जन माने मोस्टली भाभी दौरान जनरल स्टूडेंट्स कि माने गोटे पिलार कोटा अच्छी तो तार हो मो पर्सनली कोटा तो मो हिसाब से कहबी कि फॉर जनरल सीट बहुत कम रोचे कोटा छुआ नहीं जाउछंदी. एटा केबे भाबनी जदि तमे सेति हार्डवर्क कल सेति लेबर कल देन ऑब्वियसली यू कैन अचीव दैट. मान तमरा सेटा हार्डवर्क ऊपर डिपेंड करछि तम लेबर ऊपर डिपेंड मैं केते सिंसियरली से जिनसटा को पढुछ ता ऊपर डिपेंड करछि. केबे भी एटा भाबी कि डिमोटिवेटेड हो जाउनी कि जनरल छुआ को सीट कम अछि तो सेटा हबनी. हां नो डाउट टिके बहुत माने रहुचे माने लेक्युना रहुचे सिस्टम रे. बट आमे तो सेटा को चाहिले चेंज करि परिबो ना. तो सबरे हार्ड वर्क करो लेबर करो एमती किछि नाही कि जनरल छुआ पाइबेनी किछि एमती सेमती नाही. तो हार्ड वर्क कर लेबर करो हार्ड वर्क करले जनरल छुआ भी पाइबे. जदि तमे पढिबनी तन कोटा थिले कि जहाँ भी थिले से कोटा छुआ भी पाइबेनी. सो सेटा तम पे डिपेंड करछि कि केमती कोन करिवो. एंड रिविजन इज अ मस्ट. सब बड़े जहाँ भी पढ़ुच एमती ना कि 20-30 बही पढ़ीदेवी आमती करदेवी सेमती कले किछि हबनी. जी प्रेसाइजली पढ़ जी इंपोर्टेंट बुक्स से पढ़ तुम कॉन्सेप्ट थरो करो. एंड रिविजन इज अ मस्ट. जहाँ भी पढ़ुच ताको माने रिपीटेडली रिवाइज करो. सेटा ही श्योर शॉर्ट सक्सेस हबो towards achieving any goal. से तुम डबल ए हो कि तुम एमबीए एग्जाम्स हो कि जो भी एग्जाम्स हो दैट इज अ श्योर शॉट कि तुम केमती तुम रिविजन टा करूच. ऑल द बेस्ट टू ऑल द जूनियर्स. जब भी जहाँ डाउट हम तुम क्या आम भर क्या भी पचारि पार आम सब अवेलेबल रहिबो. थैंक यू ऑल. Thank you, Paripurna Didi. Didi has been posted in Devgarh. So now we have Sri Simashri Chaudhary Didi. Didi has been posted in Sundargarh. So Simashri Didi, please. Good evening, everyone. Respected Dean Sir, Professors, lovely juniors, and my dear friends. And as mentioned, I have been posted in PD Watershed, Sundargarh.
So first of all, I would like to thank CIT first to provide the worldwide knowledge, which is the key factor to achieve what I am today. The pillar behind us are our professors. Our professors, they have supported me and other students also with full enthusiasm and energy that can never be compared. I would also like to thank my juniors, my friends. After our professors, Aparna Raut and Sonali Padma Mohanty are my teachers. ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ବି ଡିଫିକଲ୍ଟି ହେଲା ୟା ଫିର ଡାଉଟ୍ ହେଲା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେମାନେ ମୋ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତି ତ ଆଇ ವುଡ୍ ଅଲସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଟୁ ଦ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କରିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫାର୍ମର୍ସ what is development? We can help them by treating their agricultural lands by soil conservation, providing horticultural plants and increasing the mechanization. But जदि गोटे विलेज या फिर ग्राम पंचायत जदि सेठी इलेक्ट्रिसिटी नहीं गोटे स्कूल नहीं सैनिटेशन प्रॉपर्ली नहीं तो आमे कौन से विलेज या ग्राम पंचायत को डेवलप्ड विलेज कहि परिवा ना कहि परिवानी so as we are the fresh batch the youth of our country or state हमको एटा ध्यान रखा पड़ियो कि rather than our job roles आमर जहाँ भी काम अच्छी as an assistant agriculture engineer we should also do some more efforts ताकि आमे गोटे village को completely developed कर परिवा with equipping all the departments health गोटे healthcare आनिया sanitation programs road थिबा दरकार electricity थिबा दरकार तो except from से टाइम में कहना चाहूँगी except from our job roles we should also give our effort in that. And to our juniors, I would like to say, follow your passion. जहाँ भी तुम्हारे passion अच्छी, हमें job को तो job is not the limit. आजकल ये बहुत advanced है लानी सब जिन्स तो जहाँ भी तुम्हारा passion, तेरा studies हो किंबा out of studies, follow that. किच्छी worried हवा दरकार नहीं कि career रे हमें कौन करियो कौन नहीं, जोड़ा तुम भला होती, जोड़ा तुम मनो को खुशी होती, सेटा ही करो. आउ रेस्ट जहाँ भी हेल्प दरकार जहाँ भी मेंटरिंग दरकार आमे अच्छू इनफैक्ट हमको भी जदि कोन हेल्प दरकार हबो आमे तमन को टू हेल्प नबो एंड आई वुड लाइक टू थैंक आवर प्रोफेसर्स अगेन एंड आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट अदर EEs. Thank you. Your words were really amazing, that to follow our dreams, because we have seen how you have pursued your career along with performing so well in all the functions. So now we have our 10th speaker, so Shri Ankita Purohit Didi has been posted in Balangir. So Didi, please. So before Didi joined, let me again confirm all those places where our seniors have been posted. So Shri Biswajit Patosi Bhai has been posted in Daspal, Nayagarh. So Shri Paripurna Devi Didi, she is in Deogarh. Shri Om Subham Swai Bhai, he is in Nayagarh. Shri BP Devashi Sahu Bhai, he has been posted in Pattamundai, Kendrapada. Sushri Arju Parvin Didi in Dhamnagar, Bhadrak. Sushri Nibedita Jena Didi in Raghunathpur, Jagatsinghpur. Shri Saurabh Gain Bhai in Umerkot, Nabarangpur. Sushri Kshanaprabha Giri Didi in Jaleswar, Baleshwar. And the rest we will be now listening from Sushri Ankita Purohit Didi, who has been posted in Balangir.
I think Ankita Didi is currently not available. I would like to continue with some of our teachers. So let's invite Dr. Mahindra Kumar Mahanti sir to speak a few words. Sir, please. I think Mahindra sir has been also disconnected. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir, you're audible. So first of all, I congratulate 2015 to 19 student or 19 batch students. Fortunately, I was the training and placement officer of that batch. So congratulations to all our 2019 students. So remember, some of your friends are already told what are the actually. First of all, I told you that be confident on yourself. And whenever you go to the field, it is different from your what you have taught here. Because actually on that field, you do not know that some problem will come. At that time, you feel that it's not taught. So don't think that it is not taught. You have a confidence on yourself, and nowadays actually you know that Google will help you a lot. So first of all, confidence on yourself for do the work. And most important is honesty and punctuality and hard work. These three things already all your friends have already told. And best of luck for your future. Thank you very much. Thank you very much, AgriVision, for participating in this type of program. Thank you very much. Thank you so much, sir. Your three words, honesty, punctuality, and hard work, we'll keep it in mind. Now, I would like to invite Dr. Bharat Chandra Sahu, sir, to continue with his words. Sir, please. Hello. Yes, sir. Hello. Yeah, you are audible, sir. Good evening. Yeah, good evening, all of you. At the outset, I would like to congratulate all the achievers of 2019 batch. I have few words to say the achievers present over here. Friends, I would like to speak something about how your fight will go in the field. You have been in CIT for 4 years. You have been groomed with the techniques, with the engineering principles to fight a specific battle in the field. And you are now in the field. Remember what you have been taught in the college during your graduation. The concepts should be with you for all the time to come. You have been taught about design of earthen embankment. You have been taught about design of a drop spillway, a chute spillway kind of thing. But have you ever got the opportunity of constructing it here and experiencing how it happens, how the estimate is prepared, and how it is actually done in the field? Perhaps not. And that is what you are going to do in the field. So your experience actually counts a lot here. For that, you have to expose yourself to various construction works that is undertaken in the fields. You may be in the Department of Soil Conservation, Department of Horticulture, Department of Agriculture. Supposing you are in the Department of Agriculture and you have to sanction a pump for a poor farmer, and the farmer is having 2 hectares of land, you are the engineer to suggest there that such and such HP pump is required for you. Unnecessarily don't go for 5 HP pump or 1 HP pump. You must have that knowledge, how much a pump discharges per hour and what is the total amount of total crop area the farmer is practicing, and
what should be the size of the pump. You are the right person. If you fail there, people will laugh at agricultural engineering. Never do that. Never let down the integrity and prestige of your alma mater, wherever you may be. If you may be in the field, people must admire you. People must recognize you. Yes, these engineers are means asset for our department. That is what I want from you, the achievers. So actually, you have to expand your knowledge now. Expand your knowledge with respect to what you have not read here. You have read here something to score good marks, but you have ignored those persons which are going to help you in the field right now. So you read those portions line by line, get it by heart, and experiment in the field. Initially, you may face some difficulty, kind of failure, that doesn't matter. Don't lose hope. And it will help you to be recognized in the department one day. This much you just means it must be carried forward with you, that you know everything, whatever kind of field practicals or whatever kind of construction works undertaken by the department, you know everything, you are exposed to everything. If necessary, of course it will be necessary for all of you, while you are preparing the estimate, where you are executing it in the field, you have to be very much, what should I say, means you have to learn many things from your immediate seniors working in the departments. They have experienced many things by this time, and you have to learn it from them. They will be your second line teachers in your life. They will really help you how to prepare estimate, how to get the work executed. So be in touch with them. And this is all about the what I want to say to the achievers and to the students who are being groomed here now in the college. Those who are organizing this program, they are also part and parcel of this institute. Tomorrow you may be required to appear OPSC for AA posts, for assistant soil conservation officer posts. So the one thing you must remember to crack OPSC, you have to have a very sound knowledge on the subject matter. Many a time I have told you in the classes some specific conceptual basic questions I used to ask all of you in the class. What define hydraulic conductivity? What is the formula? You must keep it in mind. What is the formula? Then only you will be able to define something. So that kind of attitude, spirit should be with you while you are in the job sector or in the